A very good afternoon to all of you. You're watching Midday News. My name is Aditya Balgarodra. Let's get the news rolling with the headlines first. Prime Minister Modi urges startups to come up with solutions to ensure minimal use of water. Launches Atal Bhujal Yojana on former PM's 95th birth anniversary. Also names Rohtang Pass after Vajpayee. Nation remembers former PM Atal Bihari Vajpayee. PM Narendra Modi and other ministers pay tribute at Sadaiv Atal Memorial. PM to unveil bronze statue in Lucknow. Union Cabinet approves funding for census and NPR. Union Home Minister Amisha asserts there is no link between National Population Register and NRC. Says there is no question of losing one's citizenship. Hemant Soren elected as leader at JMMs Legislature Party meet to be sworn in as CM on 29th of December. Christmas celebrated across the world. Pilgrims gather in Bethlehem, birthplace of Jesus. Special prayers being held in churches. President, Vice President, Prime Minister greet people. The nation is remembering former Prime Minister late Atal Bihari Vajpayee on his 95th birth anniversary today. President Ramnath Kovind and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his Samadhi Sadaiv Atal this morning on the occasion of his birth anniversary. Home Minister Amisha and Defence Minister Rajnath Singh, BJP veteran leader L.K. Advani, among other ministers and leaders, also paid tribute to Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee was one of the most admired, respected and loved politicians of India. He served as the Prime Minister of India 3 times. His first term was for only 13 days in 1996. He served his second term for a period of 11 months from 1998 to 1999 and then a full term from 1999 to 2004. He was awarded India's highest civilian honour, Bharat Ratna, in 2015. The tallest leader of BJP, Atal Bihari Vajpayee, has left behind a rich legacy which will be remembered as well as cherished for years to come. His legacy comprises forward-looking economic policies, massive infrastructure projects and development of national highways. It was under his leadership that India successfully conducted Pokhran-2 nuclear tests and cemented its position as a nuclear state in 1998. Born on 25th December 1924 in Gwalior, he rose to eminence as an erudite politician. As a foreign minister, Atal Bihari Vajpayee was the first person to speak in Hindi in the United Nations in 1977. His personality had many facets. He was a forceful orator, a writer, poet, a selfless social worker, journalist, but more than anything else, he was a leader among leaders. Many of his poetries touched and ruled the hearts of the people. On former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's birth anniversary, Prime Minister Narendra Modi launched Atal Bhujal Yojana in New Delhi today. Addressing gathering, PM urged startups to come up with tech to ensure minimal use of water for various needs. The central government scheme will promote panchayat-led groundwater management and behavioral change with primary focus on demand-side management. Union Cabinet approved the 6,000 crore rupee scheme on Tuesday. साथियों, इन 7 राज्यों के 78 जिलों में 8,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति
बहुत ही चिंताजनक है। इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है, वही समय सारे गांव वाले टेक्नोलॉजी से हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस बात को सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, इसके महात्मा को समझ रहे हैं। इन क्षेत्रों के किसानों की, पशुपालकों की, छोटे छोटे उद्यमियों की, वहां की महिलाओं की दिक्कतें किसी से छिपी हुई नहीं है। साथियों, लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले, जल स्तर में सुधार हो, इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जरूरी डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा। और सबसे प्रमुख बात, हमें जल संरक्षण और जल संवर्धन पर बल देना होगा, ताकि पानी की एक एक बूंद का उचित उपयोग हो। और ये आखिर होगा कैसे? इस टीम का नेतृत्व करेगा कौन? क्या अफसर करेंगे? सरकारी मुलाजिम करेंगे? ब्यूरोक्रेट करेंगे? जी नहीं। इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा, उन लोगों को जोड़ना होगा जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के संकट से प्रभावित है। On the occasion, the strategic tunnel under Rohtang Pass was also named after Atal Bihari Vajpayee. The historic decision to construct a strategic tunnel below the Rohtang Pass was taken on 3rd June in 2000 when late Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister. The foundation stone for the access road to the south portal of the tunnel was laid on 26th of May 2002. The cabinet approved 4,000 crore rupees for this. अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। करगिल के युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। और अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अनेक प्रकार के इसके महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन साथ साथ लेह, लद्दाख और करगिल, ये एक टनल वहां का भाग्य बदल देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। Defence Minister Rajnath Singh, Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat also addressed the gathering on the occasion. प्रधानमंत्री जी की देखरेख में जिस तरीके से यह टनल बनाया गया है, आप सबको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस टनल का निर्माण तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। 4,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि इस टनल के निर्माण के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को 1,000 करोड़ कम में ही बनाने में कामयाबी हासिल की है। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि जल जैसे गंभीर विषय पर इस दृष्टिकोण से बातचीत की गई हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की विशालता है कि उन्होंने जिस विषय के ऊपर भी बात करना शुरू किया, देश के 130 करोड़ लोग उस पूरी शक्ति के साथ में, उस विषय के साथ में जुटे हैं और हमने सफलता प्राप्त की है। जल के प्रबंधन और जल के संचय और संरक्षण का विषय भी निश्चित ही एक जन आंदोलन का स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में ले रहा है। Vice President M. Venkaiah Naidu paid floral tributes to Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary. In a Twitter message, Naidu said, Vajpayee was truly a multifaceted personality. The Vice President added, Vajpayee's inspirational speeches,
peppered with wit and poetry, helped him connect with millions of Indians across class and caste divides. As Prime Minister, he won accolades for reducing the role of government in running businesses and for pioneering a connectivity revolution in India. Prime Minister Modi too paid tribute to ex-PM Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary. PM posted a video remembering Vajpayee. अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। कब बोलना और कब मौन रहना, वो जो ताकत थी वो अद्भुत थी। व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना और लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है। प्रतिस्पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व की तरफ देखते रहे। ये अटल जी से सीखने वाला विषय है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। Prime Minister Narendra Modi will unveil a 25-feet bronze statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at Lucknow's iconic Lok Bhavan today. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Governor Anandiben Patel will also accompany PM Modi during the event. The Prime Minister is also scheduled to lay the foundation stone of the Atal Bihari Vajpayee Medical University in the state. Union Home Minister Amisha has asserted that NPR won't affect anyone's citizenship. In an interview to a news agency, ANI, Amisha said the National Population Register has no connection with the National Register of Citizens. He further said that NPR won't be used for NRC as NPR data is used for making government schemes. According to the Home Minister, there was no need to debate NRC as there is no discussion on it right now. एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। The Home Minister also accused the opposition parties that they are spreading fears among the people. उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है। और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद माइनॉरिटी को गैस भी मिला, घर भी मिला, शौचालय मिला, अब हेल्थ का कार्ड मिला है। अगर ये डराने का कार्यक्रम न करते तो अब तक मिल चुका होता। और अभी भी उनको ये सारी सुविधाएं न मिले, इसीलिए कुछ ऑपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोई मुझे समझा दे कहां है। ये नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको किसी को डरने की जरूरत नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि समय अनुकूल नहीं है, मैं बताता हूं, इसका नोटिफिकेशन एनपीआर का भारत सरकार ने 31/7/19 को कर दिया था, जब सीए आया ही नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया वो तो अभी आया, उस वक्त ये आया ही नहीं था।
उसकी फाइल भी शुरू नहीं हुई थी नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। उस वक्त 31/7/2009 को इसको नोटिफाइड कर दिया गया था, ये एक्सरसाइज को, और बहुत सारे राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने कर दिया है नोटिफाइड, क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है, इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, डिटेंशन सेंटर जो बने हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक, दुनिया में से कोई भी आदमी घुसकर रह सकता है। इस देश का एक कानून है, अगर एक नागरिक पकड़ा जाता है, कोई भी देश का है, यूरोपियन देश का है, जिसको वहां जाने की परमिशन नहीं है, यहां रहने की परमिशन नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। बाद में इसको वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है। ये डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है। In some key decisions, the Union Cabinet gave its nod to update the National Population Register. Over rupees 3,941 crore were approved for the updation exercise, which will begin from April next year. In other decisions, the Cabinet also approved restructuring the Railway Board and an ordinance to further amend Insolvency and Bankruptcy Code. The Union Cabinet on Tuesday approved the decision to update the National Population Register. It has allocated 3,941 crore for the purpose. Alongside the updation exercise that will start from next April, the house listing phase of Census 2021 will also begin from April to September 2020 in all states and union territories except Assam. The NPR is a list of usual residents of the country who are defined as people who have resided in a local area for the past 6 months or more, or people who intend to reside in that area for the next 6 months or more. टारगेटेड बेनिफिट्स जो होते हैं, समझो आयुष्मान है, उज्ज्वला है, आवास है, सौभाग्य है, ऐसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान होना, क्योंकि जनसंख्या में भी, जनगणना में भी और पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आवश्यक सारे डिटेल्स आते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन है, और इसके कारण वो सभी और सही बेनिफिशियरीज, सभी और सही लाभार्थियों तक ये बेनिफिट्स पहुंचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी भी बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, इसमें पीडीएस के लिए, सर्वम के लिए ये जानकारी उपयोग में लाई जा रही है, और राजस्थान में भामाशाह योजना के लिए भी लाई गई। The Union Cabinet also approved the proposal to conduct the Census of India 2021 at a cost of over 8,750 crore rupees. इसमें सभी लोगों की गिनती, ये मुद्दा होता है। इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये काम चलेगा। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, वो घर घर जाएंगे, और फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब इसका ऐप तैयार किया है, और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा। In other decisions, the Cabinet approved an ordinance to amend the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 through the Insolvency and Bankruptcy Code's Second Amendment Bill 2019. A decision to create a Chief of Defence Staff who will be the single point military advisor to the government was also approved. According to Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar, the CDS will be a 4-star general and his salary will be equivalent to that of service chiefs. In a landmark decision with a tremendous reform in higher defense management in the country, the government has approved to create the post of Chief of Defence Staff in the rank of 4-star general with salary and perquisites equivalent to service chief, and the Chief of Defence Staff will also head the Department of Military Affairs to be created within the Ministry of Defence and function
as its secretary. A decision to restructure the Railway Board by downsizing its strength from 8 to 5 and merging its different cadres into a single railway management system was also taken on Tuesday. The newly constituted board will have members for operation, business development, human resources, infrastructure and finance. Indian Railways will now have only one cadre, Indian Railway Service, instead of current 8 services for various departments including engineering, traffic, mechanical and electrical. Union Cabinet took a very historic decision to merge all these 8 organized services into one service called the Indian Railway Management Service, IRMS. And now all the employees at management level, all the 8,400 employees who work for the Indian Railways at the management level will all be coming into the railways through one service called Indian Railway Management Service. The cabinet also agreed to release funds to the tune of 627.40 crore rupees for the 10 projects sanctioned during 2018-19 in Swadesh Darshan scheme. Under the scheme, the Ministry of Tourism is developing critical tourism infrastructure in the country to make India a world-class tourist destination. Bureau Report, Rajya Sabha TV. With this, we'll halt in for a quick breather, but we'll be back soon. Stay tuned with us. Welcome back. You're still with us on Midday News. In Jharkhand, JMM working President Hemant Soren will take oath as Chief Minister on the 29th of this month. On Tuesday, he met Jharkhand Governor Draupadi Murmu and staked claim to form government in the state. Soren was accompanied by leaders of his party, the Congress and RJD. The letter handed to the governor said that the alliance has the support of 50 MLAs consisting of JMM, Congress, RJD and the Jharkhand Vikas Morcha, Prajatantrik. Earlier in the day, he was formally elected as a Jharkhand Mukti Morcha legislature party leader. The pre-poll opposition combined had bagged 47 seats, JMM 30, Congress 16 and RJD 1 in the state's 81-member assembly. Vice President M. Venkaiah Naidu stressed on the need to conserve indigenous cattle breeds and strengthen farms to conserve high-merit indigenous breeds. Vice President M. Venkaiah Naidu has said that by increasing milk productivity per animal in the country, the situation of dairy farmers can be improved. The Vice President visited the ABC semen station dedicated to animal breeding and production of quality semen at Vijayawada. He called upon farmer cooperatives, agriculture universities and scientists along with Kisan Vigyan Kendras, which must encourage farmers to diversify into allied services, including milk production. Promotion of animal husbandry, dairy and also agriculture-related activities. I made up my mind that I should come here and see this wonderful work that is going on. Today is also the birth anniversary of freedom fighter Pandit Madan Mohan Malviya. Pandit Madan Mohan Malviya was also called Mahamanna. He founded the Banaras Hindu University to promote a modern education system in India. On December 25, 1861, Pandit Madan Mohan Malviya was born to a Brahmin family in Allahabad. Pandit Malviya had a multifaceted personality. He was an educationist, journalist, lawyer, politician and freedom activist. Prime Minister Narendra Modi also paid tribute to Mahamanna Pandit Madan Mohan Malviya on his birth anniversary.
Christmas is being celebrated today with religious fervor and gaiety. Christians all over the world celebrate Christmas to mark the birth of Jesus Christ. President, Vice President M. Venkaiah Naidu and Prime Minister have greeted the people on the occasion. President Ramnath Kovind said that we celebrate the birth of Jesus Christ, whose life has been a source of inspiration for humanity, whose life gives us a message of love, compassion and brotherhood. Today, when the world is oppressed by conflict, hate and violence, their thoughts and deeds have the power to heal the wounds and show the way. Vice President M. Venkaiah Naidu also wished people, saying Jesus Christ was born for the sacrifice and salvation of the hurt humanity. His eternal life message of compassion, kindness, love is more relevant today. Prime Minister Narendra Modi also extended greetings to the nation on the occasion of Christmas and remembered the noble thoughts of Jesus Christ. Taking to Twitter, the Prime Minister said that the teachings of Jesus inspire millions of people across the world. Pope Francis kicked off Christmas celebrations with midnight mass at the Vatican in Rome last night. Pilgrims from around the world gathered on Tuesday in the biblical city of Bethlehem, revered by Christians as the birthplace of Jesus, to celebrate Christmas in the Holy Land. Thousands of people converged on the town in the Israeli-occupied West Bank, with festivities taking place in and around the Church of Nativity. The festival is being celebrated all over the world. We at RSTV also wish you a very Merry Christmas and will leave you with the visuals of celebrations. Thanks for watching.